Yes, dear students, in the series of numerical physics, we have today numerical, which is like this. A block of mass 20 kg is kept on a rough inclined plane as shown in the figure. A force of 3 Newton is applied on the block. The coefficient of static friction between the plane and the block is 0.6. What should be the minimum value of force such that block does not move downward? Take the value of g is equal to 10 meter per second square. Now in this question, if we go through it, this is an inclined plane. Now here, if we make it, this is the mg which is acting downward. We can have two components. This angle will be also 45 degree. It is mg cos 45. mg, the weight of the block is acting downward. ये किस ओर एक्ट कर रहा है? Vertically downward एक्ट कर रहा है. Here 45 डिग्री का एंगल बना रहा है. तो इसके दो कंपोनेंट्स जो हम रिजॉल्व करेंगे, तो एक कंपोनेंट हो गया आपका mg cos 45 और दूसरा हो जाएगा mg sin 45. Now mg sin 45 will be also acting in the direction of the force applied. Now there will be normal reaction. This will be perpendicular to it r, and the force P which is acting in this direction. So the block, what should be the minimum value of force P such that block does not move downward? Now here, if we go through this, we have this force P which is equal to mg sin 45 plus this 3 Newton. यदि ये बैलेंस्ड है और इससे ज्यादा है, if P is more than equal to or more than this, ये डाउनवर्ड नहीं मूव करेगा. तो अब हम देखें यहाँ पे, तो हमारे पास में रिएक्शन है R की वैल्यू आपकी होगी mg cos 45. Mass is given to you 20, g is 10, cos 45 is 1 by root 2. So it is 200 upon root 2. So we have the reaction R under 200 upon root 2. Root 2 multiplied in numerator and denominator, it will be root 2, and root 2 into root 2 will cancel it. So finally we will have 100 root 2 Newton, which is the R. This. Now if we go through the P is equal to mg sin 45 plus 3. So we can calculate it. mg, m again 20, g is 10, sin 45, that is 1 upon root 2 plus 3. Okay. So here we have Fs. First we will calculate the force of friction also, है ना? इसको हम कैलकुलेट करके रख लेते हैं. It is 200 into this 200 upon root 2 plus 3, and 200 upon root 2 means 100 root 2 plus 3, and 100 root 2 means it is 1.414 plus 3, so it is 141.4 plus 3, so it will be 144.4 Newton. This is the force which is acting. Now force, we know that force of friction is equal to mu into R. So force of friction that we can determine with the help of this. Fs is equal to 0.6, and we have calculated the reaction, that is 100 into root 2. So it is 60 root 2. It is 60 root 2 means 60 into 1.414, it is 84. The force of friction which comes into play, that is 84.84 Newton. And we will see this force
P which is coming to us, that is 144.4 Newton. This force and force of friction which we are getting here, it is sorry, 84.84. Now if we see the block, if it is the coefficient of static friction between the plane and the block is 0.6, what should be the minimum value of force P such that the block does not move downward? Move downward, यदि ये move downward करेगा तो force of friction will act in this direction, opposite to this. So if we have 144.4 Newton which is acting in this direction and the force of friction is also in this direction. So if we are getting this P is equal to 144.4 Newton and 84.84 Newton, और हम क्या चाह रहे हैं कि what should be the minimum value of force P such that block does not move downward, block नीचे की ओर नहीं आना चाहिए. मतलब इसका अपोजिट हम देखें तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसके अपोजिट हो जाएगी, और इसके अपोजिट हो जाएगी तो हम कहें कि P जो होगा P इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एक तो फोर्स आपका एक्ट कर रहा है F और दूसरा आपका क्या हो जाएगा माइनस Fs. ठीक है, तो F जो एक्ट करेगा, जो हमने कैलकुलेट किया, एक तो हमने ये तो निकालना है हमको, तो ये जो फोर्स एक्ट करेगा, ये फोर्स आपका कितना है, इसको मैंने F के लिए, इसको F की जगह ये लो F mg sin 45, ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है, एंड इसको कैलकुलेट कर लिया. अब ये जो फोर्स आ रहा है ये आपका 144.4 न्यूटन आ रहा है, और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद में 84.84 न्यूटन को, तो ये कितना हो जाएगा आपका 406 9 14 में 5, ये हो गया आपका 5 14 में से 5 गया 9 9 14 में से 9 गया 59.56 न्यूटन का ये जो फोर्स आ रहा है, इसको हम F लिखना रह गया, हमको इसको F लेना चाहिए. तो यहाँ पे ये 59.56, इसको हम इक्विवेलेंटली 60 न्यूटन भी कह सकते हैं. नियरली 60 न्यूटन का फोर्स जो ये इस डायरेक्शन में लगेगा तो ये बैलेंस्ड रहेगा, डाउनवर्ड मूव नहीं करेगा, नीचे की ओर नहीं आएगा. ठीक है, तो नियरली वी कैन से 59.56 न्यूटन मींस नियरली 60 न्यूटन का जो फोर्स है व्हाट इज रिक्वायर्ड टू कीप इट एट दिस प्लेस, या ऊपर की ओर मूव कर सकता है, इससे ज्यादा हो जाए फोर्स. सो वी कैन डिटरमाइन इन सच अ मैनर